data है, जैसे I think some panelists also mentioned previously as well, data can be interpreted in 100 ways. I think so. The जो data की accuracy है और उसकी validity है, I think that works in a marketplace. So for data to test to pass the test of accuracy and validity, we need to create a marketplace of data sets where all the data that the government creates. I think पाकिस्तान में कानून है, वो कानून implement नहीं होता. Government का जो भी data है, everything should be completely open to scrutiny, and then the government needs to also move out of the data creation business to some extent as well. So PBS जो है उसको, why does it have to be PBS who's generating data? The government can outsource that work to private companies, and we would get to see if the data being generated is of good quality. There could be competitors who are generating the same data so that the government has a fair sense of things. बहुत सी चीज़ों में गवर्नमेंट इस तरह से कर भी रही है. So जो नेशनल स्टेटिस्टिक्स हैं या इम्पोर्टेंट चीज़ें उनको, so I would say that authenticity and validity के लिए सब the largest thing that can be done is basically trying to create a competition. हमारे यहाँ बहुत सी चीज़ें बहुत ही आर्काइक भी हैं. मसलन आप हैरान होंगे कि नेशनल स्टेटिस्टिक्स जो हैं प्रोविंशियल लेवल के ऊपर कोलेट करने या पब्लिश करने जो हैं वो आउटलॉड हैं. तो 1971 में जब बांग्लादेश वाला डेबेकल के बाद से जिसमें कहा गया कि नेशनल स्टेटिस्टिक्स जो हैं वो एक कंट्रीब्यूटिंग रीज़न थे उनकी सेंस ऑफ डेप्रिवेशन में, तो द गवर्नमेंट outlawed details of that sort of data to be shared. So we need to create a lot of openness in data that the government is creating. We need to allow other people to create data. The government needs to outsource data generation so that एक एलिमेंट आई थिंक मुस्तकिल ये रहता है कि जैसे गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ हैं, हमारे यहाँ रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ और इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज़ का कॉन्सेप्ट जो है वो परवान नहीं चढ़ सका. वरना टेक्निकली जो पीबीएस है वो गवर्नमेंट का एक इदारा नहीं है, गवर्नमेंट से एक इंडिपेंडेंट इदारा है जिसके अंदर प्राइवेट सेक्टर के भी लोग हैं और ओवरसीइंग बॉडीज़ भी हैं. तो एक मज़ीद अटेम्प्ट की जा सकती है ऑफ ट्राइंग टू मेक श्योर दैट दैट सॉर्ट ऑफ इंडिपेंडेंस एंड सेपरेट एंटिटी. अदरवाइज तो गवर्नमेंट जो है अपने बारे में खुद ही डेटा क्रिएट किए जा रही है, इसीलिए उसकी रिस्पेक्ट भी नहीं होती. So when the government says कि अच्छा GDP जो है वो 0.5 हो गई है, a lot of people say ये 0.5 नहीं हुई, आप लाइफ स्टॉक का डेटा जो है वो किसी और मिस इंटरप्रेट करके आप डाल रहे हैं. A lot of people said Ishaq Dar would fudge numbers, and probably he did. And then हमारे यहाँ उस तरह का कॉन्सेप्ट भी है कि नेशनल सिचुएशन के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, तो नंबर फर्जिंग जो है वो भी चल सकती है. So the solution is basically to create a marketplace to make private sector get in. The government should get out of all of this. Independence of government institutions away from the bureaucratic and political interest. At the same time, I think जो privacy वाला issue, I think that's very, very crucial. I think my understanding is that one reason why a lot of data projects eventually fail is because they don't have, Pakistan does not have a very good data regulation law. So जब लॉ नहीं होता तो फिर जो आप बेदरे होकर और निडर होकर कोई काम नहीं कर सकते, because you're always possibly trampling over a violation. और वो जो आप पे कदगन लगाना चाहते हैं वो आप पे किसी भी वक्त ये कह सकते हैं कि ये इस कानून से मुबर्रा है. इसलिए पाकिस्तान में डेटा रेगुलेशन पे और प्राइवेसी के ऊपर लॉज बनाने की ज़रूरत है, और वो लॉज जो हैं दे हैव टू बी क्रिएटेड इन अ नेगोशिएटेड वे. अदरवाइज हम जैसे हम हमेशा करते हैं, हम इतने रेगुलेशंस ले आते हैं और हम गला घोंट देते हैं. तो रेगुलेशन की ज़रूरत भी है, मगर ऐसे रेगुलेशन की कि जो डिजिटल मीडिया का गला ना घोंट दे. पीएमएल गवर्नमेंट ने इससे सिमिलर चीज़ करने की कोशिश की तो उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर बैन लगा दिया, या इस गवर्नमेंट ने यूट्यूब पे टैक्स लगा दिया.